हेलो एंड वेलकम टू संवाद। तो फिर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हंग्री हेड के को फाउंडर्स राहुल और अर्पित, जिनका शो शार्क टैंक पे भी जो आए थे फॉर फंडिंग, बट कुछ रीजंस के कारण उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाई। लेकिन हम इनके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो पूरा जर्नी रहा है स्टार्टअप का, वो कैसे रहा, और उसके बाद वो शार्क टैंक का जो रोल था उसने कुछ इनको मदद, इनके बिजनेस में मदद की, या मतलब बस एक हवा है शार्क टैंक के नाम की। तो फिर हम इस पॉडकास्ट के थ्रू सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू राहुल एंड अर्पित फॉर ऑल कमिंग ओवर द पॉडकास्ट। Thank you, Thank you for Om, for having inviting us me. over here. So first of all, tell you, how was your childhood? Childhood was great, यार, Om. Born and brought up in Mumbai. बॉम्बे के हर मतलब बोलते हैं ना कि रहन सहन साथ में बॉम्बे की पूरी हवा हम में भरी हुई है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो खाने से लेके घूमने फिरने तक आई एम श्योर दैट आई हैव ट्रैवल्ड ईच एंड एवरी बिट ऑफ बॉम्बे। How about you, Arpit? So मेरा चाइल्डहुड शुरू हुआ इंदौर से, तो जो जिसको फूड का कैपिटल माना जाता है फॉर स्ट्रीट फूड। सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। आई वाज बोर्न इन इंदौर एंड देन वी शिफ्टेड टू बॉम्बे। एंड शुरू से ही एक खाना बनाने का इंटरेस्ट बचपन से ही था। सो मॉम के साथ में आई यूज्ड टू कुक विद mom during my childhood days. So the first recipe which I cooked, that was pav bhaji at the age of 7. तो उस 7 साल से वो एक पैशन कह सकते हैं कुकिंग के लिए था, and then converted my passion into my profession by HUNGRYHEAD and becoming a chef. Okay, so what has your educational background been before doing HUNGRYHEAD? What have you studied? In which college? So I have done my graduation in hotel management and catering technology, and done my training at Vivanta by Taj President, and worked with Taj Group of Hotels also. Then entrepreneurial journey started with HUNGRYHEAD. Okay. How about you, Rahul? So I've done my BCom from Mumbai itself, and I've done my business management also from Wellington. और उसके बाद में यस एक पैशन था फूड इंडस्ट्री में आने का, बिकॉज मैं जैसे हमने ये स्टार्ट किया था स्टोरी, तो हमें खाने का बहुत ज्यादा शौक है। मतलब मुझे, चाहे अर्पित को एंड यश एज वेल, थर्ड पार्टनर, तो हमें खाने का बहुत ज्यादा शौक है। तो हमने खा तो काफी लिया था, जिसके कारण वजन भी बहुत बढ़ गया है, बट ठीक है, खाने का मौका मिला तो खाया, और अब खिलाने का मौका मिल रहा है, तो अब यस वी आर देयर विद HUNGRYHEAD। तो फिर आपका जो बैकग्राउंड है पूरा डिफरेंट है, आप बीकॉम से और अर्पित जो है शेफ है। तो फिर आप दोनों पहले कहाँ मिले, और मतलब कहाँ से HUNGRYHEAD का ये आइडिया है कि शुरू करते हैं? तो इस जर्नी के बारे में मैं बताता हूँ आपको। So we are 3 partners basically, myself, Rahul and Yash. So we met through a common friend. So I was working with Taj, and I used to take in my free time I used to teach cooking also to students and to especially women. So one of my common friends है मम्मी के, उनके थ्रू वी मेट। उनके जो सन है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद राहुल एंड यश। So through them we met, and then we started this journey together at HUNGRYHEAD. Okay. कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था HUNGRYHEAD? So we met in HUNGRYHEAD started in 2014, September 2014.
But we met in 2013 during the month of I think April, May. And it took us almost a year to get the menu, get the place and everything. So एक साल का पूरा homework था हमारा before we started our Hungry Head. Okay. So आप बोले कि आप तीन पार्टनर्स हो, हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें? So we are equally the equity है, that is equal है. And अच्छा contribution आप पूछ रहे हैं, sorry. So I look after the food and the जो भी inventions है, food related inventions हैं, drinks related है. The food part, I am the food doctor, you can say. So I look after the food thing. Then Rahul looks after the branding, marketing, and Yash looks after the finance. Okay. यश का background क्या है? So he is also MBA, and he's also done his BCom, and then he's also done his MBA. Okay. So I would like to share one story. So Yash is not with us right now. He passed away in a bike accident. So Yash is he's not with us, but he's still an integral part of Hungry Head. Yes, we were speaking about what were your roles in the Hungry Head. So I want to ask, like, you are chef and Rahul manages all the rest of the things like branding and everything. So Arpit, can you tell what are the basic what things a chef needs to know to become a good chef? So there is nothing like a good chef. It is all about your passion, your taste, and your love for the food. Yes. So you cannot be a good chef unless and until you don't love food. That is what I think. I might be wrong also, but ultimately it is your passion which drives you. Your love for food, your love for the produce, your love for the ingredients, and the love for food basically, which makes you a good chef. Skills can be taught, but the love for food has to come from your heart. So unless and until it's not coming from your heart, you cannot be a good chef. That is what I think. Yes. So coming over to Rahul said he manages everything related to branding and rest of the things. Can you tell what are the important things related to the branding? See, for branding, I would say the simple and the aesthetic you are with your branding. You talk about your menu presentation, you talk about your food presentation, and your brand, being displayed in anywhere. It should be very simple, clean. You should focus on your product rather than any other matters. So for me, branding is like very simple. It should be very focusing on your food, as we are into the restaurant industry. So it should focus on food more than rather on the all events and everything. Okay. So as you said, placing the brand at a right place is also great thing. Okay. So as you said, you started HUNGRYHEAD in 2014, and right now it is 2023. Through all these years, what has been your learning, like Arpit as a chef and Rahul as you manage all different other things? How has the change in market been? So we have seen good times and bad times both throughout our journey till yet. So 2014 when we started, we had seen a very good time, saying that people appreciated our food. It was being liked by everyone. Each and every age group was loving the kind of creations we had. So 14 we started with one store,
And in 2015, we came up with another store in Ghatkopar, which was a 45-seater restaurant kind of a place. So that was a very very big step which we would have taken in that time, because we thought that यार कैसे करेंगे, क्या होगा. And एक बोलते हैं ना, एक छोटा सा फास्ट फूड एक बड़े रेस्टोरेंट के स्टेप लेके अगर उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक वो चैलेंज था. बट यस, द चैलेंज वाज एक्सेप्टेड, पीपल लाइक्ड इट and appreciated by everyone again in 2016. So 2017, yes, the market was very good. We were about to have our few more outlets in Mumbai. We had planned for Kharghar was the upcoming store which we were having in Kharghar, as well as in Thane as well. 2017, magar 2018, unfortunately, an incident happened with us that we lost our yash, and that was the time when we were starting to grow our brand, and things were very the Maggi was banned in 2017, if I'm not wrong, Arpit, right? No. I'll get back. I'll tell you. So when we started our journey, it was going good. We were getting good response, good reviews actually. Good response, नहीं कहना चाहिए. Good reviews from our customers. And so when we entered with this concept, we were like, we are entering into a foolproof market. Maggie is loved by everyone. Maggie can be had by anywhere, anytime, anyhow. So we thought we are entering in a foolproof market. Maggie को क्या हो सकता है? Anything cannot happen to Maggie. यार Maggie तो every time it's going to be available. कभी कुछ हो नहीं सकता है Maggie को. But 2015 May, Maggie was banned in India. So we for 2 or 3 days का stock था हमारे पास, and we didn't know कि आगे क्या करना है हमको. And like अब Maggie तो है नहीं. Now we cannot stop the show. So we took it as a challenge, and we stopped using Maggie. We shifted to another brand of noodle. So उसमें हमने जो सबसे important चीज सीखी that was that our sauces, जो हमारे proprietary sauces है ना, those are very good. People love those sauces, the flavors, जो उनके flavors हैं. तो वहाँ से हमें समझ में आया कि our sauces, people, we obviously the taste wasn't matching up to Maggie, but people were still satisfied with the flavors. People were not there was no negative review or a negative comment by the customer that obviously Maggie nahi hai, so it is a different flavor altogether. But we were appreciated for and I would say we were very happy to have loyalty of the customers, which they stuck with us during that phase of time. Almost 6 months Maggie was banned, and during Diwali again Maggie was the ban was lifted from Maggie, and then we were again back with Maggie. So I would say the loyalty of the customers and the belief in our proprietary sauces, which we got during that phase, was a very big learning curve in our entrepreneurial journey. Okay. Right now we were speaking about HUNGRYHEAD. Can you explain to everyone who is listening about HUNGRYHEAD for first time? What is HUNGRYHEAD? What it does and what it provides? So HUNGRYHEAD is a concept store which was started in 2014, having to serve to the people, serve to the masses, I would say, to a 5-year-old kid to an 80-year-old person. वो हमें वो था कि हमारे पास से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए.
we would like to feed everybody. चाहे वो एक 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो एक 80-year-old elderly person हो, हमारे पास से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए. And we took it as a challenge also कि यार we should do something with Maggi, because Maggi ऐसा product है जो सबका फेवरेट होता है. सबकी अपनी एक मैगी कहानी होती है. ऑब्वियसली ओमकार, आपकी भी एक मैगी की स्टोरी होगी, वो हॉस्टल वाली मैगी या वो रात को प्रोजेक्ट स्टेशन वाली मैगी. तो एवरीवन रिलेट विद मैगी. तो बस उसको हमने अपना प्रोफेशन बनाया, एंटरप्रेन्योरल जर्नी हमने अपनी स्टार्ट करी उसको लेके. So it took us almost a year to establish the first menu and the store. तो उसके पीछे काफी ट्रायल्स हुए, काफी इनोवेटिव आइडियाज आए, कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ अनसक्सेसफुल हुए. And in 2014 we came up with our first menu, which had Magbugs, which are made out of Maggi. The burger patty is made out of Maggi. Then we have the Maggi, which is pizza made with Maggi. Then Sizzlers. Dhire then we started inventing all these flavors. So it is every year or every 6 months or every 6 months we try to innovate with the flavors. Okay. Right now you said that your business is very much dependent upon Maggi. Okay. When the Maggi got banned, it was like a shock to you as well. So what are you planning to do that you are not so much dependent on Maggi? Are you planning to make your own Maggi, or what are you planning to do about it? That can be done if you want, but we are pretty sure that we want to stick to Maggi. But yes, as your question states that you are very dependent on Maggi, yes we are, but ऐसा नहीं है कि we cannot go without Maggi. See, what I told you earlier also, our proprietary sauces are the main core ingredient for the Maggi to make. So if I take for example any kind of noodle or rice can be used with our proprietary sauces to make another flavor. But as the loyalty, not you can say loyalty, but as a flavor part of Maggi, we are sticking to Maggi. Okay. So but right now proprietary sauces can be used with any other noodle or rice or any other type of pasta. तो फिर हमने बहुत सारी बातें कर ली कि आप ये हंग्री हेड क्या है, बाकी सारी चीजें क्या है, लेकिन हंग्री हेड को बहुत सारे लोग शार्क टैंक से जानने लगे. So how was the process of getting into Shark Tank, and what happened over there? So Shark Tank के अंदर when we got to know about Shark Tank, मतलब कि Shark Tank इंडिया में आ रहा है, तो यश का एक सपना था इस चीज को कि मुझे मेरे ब्रांड को या फिर मुझे मेरे कंपनी को शार्क टैंक में लेके जाना है. और जैसे हमें ये पता चला कि भाई शार्क टैंक इंडिया आ रहा है, इमीडिएटली हमने जो भी उसका प्रोसेस रहता है, जो फॉर्म फिलअप है एंड एप्लीकेशंस जो भी है, हमने हमारे तरफ से उसको अप्लाई किया. देन देयर वर 3 stages, 3 rounds where we have been हमारी प्रोडक्ट को, हमारे पिच को एग्जामिन किया गया. एंड that's how we we came into the final stage of Shark Tank. And being the experience of Shark Tank was really great, I would say. Like all over, मतलब मेरे हिसाब से चाहे वो हमारे ब्रांड के लिए हो, then the experience to learn where we were going, like हमारी गलतियां कहाँ पर है, हमें क्या चीज से उस चीज को कोप अप करना चाहिए है, एंड हमारे की फैक्टर्स भी हमें मतलब उसमें पता चला कि भाई हम कहाँ बहुत ज्यादा अच्छे हैं इस चीज को लेके. तो यस, इट वाज अ लर्निंग स्टेज एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑल टुगेदर. ओके. Appreciated by every sharks on the desk when we were there. So the best thing what happened on Shark Tank with us, जो हमें एक चीज का डर था ना, कि जो एक फियर होता है कि आपका प्रोडक्ट जो होता है टैंक में जाके
आपका प्रोडक्ट फॉल्टर नहीं करना चाहिए। वो हमारे साथ नहीं हुआ। Every each of the sharks present on the panel loved the food, loved the branding, loved the overall presentation and everything. So जो बाकी के एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है कि भाई उनके प्रोडक्ट को ही वो माइलेज नहीं मिलता है, वो हमारे साथ नहीं हुआ। हाँ, वी गॉट नेगेटिव कमेंट्स अबाउट द मैगी का थिंग एंड एवरीथिंग, बट दे ऑल लव्ड द फूड, लव्ड द ब्रांडिंग। सो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव था कि टॉप 5 people in the country right now are appreciating your food. तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। राइट राहुल, जैसे आपने बताया कि आप उसके जो फाइनल स्टेज था उसके पहले 3 स्टेज हुए थे। इन 3 स्टेजेस में क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं 3 स्टेजेस के बारे में। So it is more see there are set of, so they go through everything, your background, your figures, your sales. तो बहुत सारे questionnaires आते हैं वहाँ से। Basically, you know your data is being analyzed properly, like आपका फूड हुआ तो आप अगर अभी हम अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से हैं तो हमारा फूड वाज बीन एनालाइज्ड, देन आवर जर्नी वाज बीन एनालाइज्ड, देन कैसे हमारी जर्नी रही है ओवरऑल, then obviously our sales figures and everything. So each and every part was been analyzed very अच्छे तरीके से, and क्या हमने अचीव किया है और क्या नहीं हमने, वो सब चीजें मतलब वो एनालाइज कर सकते। So the stages are that way, आपको वहाँ पे पिच किया जाता है, there is a mock pitch which happens over there, where you things get filtered and everything, वो हिसाब से। So they have a proper audition also, where they see how presentable are you, how are you answering the questions and everything. So वो होता है, एक audition भी होता है, and if you clear that audition, then you get a chance to pitch in front of the sharks. So आपने बताया कि आप शार्क टैंक में गए थे, तो फिर वहाँ पे 3 राउंड हुए, उसके बाद जो फाइनल राउंड था वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके मतलब उस डोर के थ्रू जाके बोलते हुए ऐसे कुछ बोला जाता है कि एक्शन कट टेक 1 टेक 2? नहीं, obviously वो see it has to be shot properly. So there are a few takes, but pitch में कोई take नहीं होता है. Pitch is 1-to-1 live. There is no cuts, there is no retake या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही बार में आपकी it's live, but as we are talking it is as live as it can be. हाँ, उसके लिए आपको prepare किया जाता है। You know because of the cameras, lights, आप conscious हो जाते हो, तो उसके लिए आपको prepare किया जाता है। There is a 3-day program या एक training बोल सकते हैं आप, क्योंकि you are new to the cameras, you are new to the lights and everything. So आप conscious ना हो तो आपको उस pitch का मतलब practice and वो कराया जाता है, and then you are pitching in front of the sharks. Okay, so हमने देखा कि आपका शार्क टैंक पे जो हुआ उसके पिच हुआ, पिच के बाद आपको एक फीडबैक मिला कि आपके जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है, और नहीं तो आपको कोई तो एक ऐसा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए कि जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत और अच्छे से एक्सेलरेट हो। तो फिर शार्क टैंक के बाद आपने कुछ बिजनेस में चेंजेस किए और आपके जो फिगर्स थे या कुछ बड़े हैं या मतलब स्टिल वैसी लेवल पे? Definitely the figures have grown, and जो शार्क के suggestions थे, we have tried to implement those suggestions also, and we are now again in the growing stage. वापस हम we are now expanding to new locations and new stores. Okay. So पिछली बार आपने वैल्यूएशन कुछ तो मांगी थी अराउंड 10 CR. Yes. So right now, considering all the things, what will be your valuation be right now? So there, I think Rahul will be a better person to tell. So
Valuation, to be honest, see, it really depends upon the market and जो हमारी growth जिस तरीके से अभी हुई है इस last Shark Tank से लेके अभी तक, yes, we pitch ourselves more than the what we have valuated ourselves, but I won't be able to say what figures, but yes, we pitch ourselves more higher, very much higher than the valuation which we created over there. ओके, सो पिछली बार आपका एक ही आउटलेट था जिस समय आप शार्क टैंक पे आए थे, अभी ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है। आपके आउटलेट्स कितने बड़े यार, आपने आपकी जो प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस करे? So we have added one more outlet. So we are now at 2 outlets. And obviously processes में थोड़े बहुत changes आए हैं, menus में थोड़े बहुत हमने changes किए हैं। जो हमारा इतना वास्ट मेन्यू था, उस वास्ट मेन्यू को थोड़े हमने ड्रॉप डाउन किए हैं टू मेक द प्रोसेस फास्टर एंड इजियर। एंड देन जो एक बोला था कि केकीनेस हो जाता है, दैट अगेन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू ट्राई मोर इम्प्रूव ऑन दैट ऑल्सो। उसमें भी हमने इम्प्रूवमेंट किया है अभी। एंड यस, उसके बाद से जो भी हमको सजेशंस वहां से मिले थे, जो फीडबैक आया था, वी आर वर्किंग ऑन दोस फीडबैक्स आल्सो स्टिल। तो फिर अभी आपका जो सेकंड आउटलेट है कहाँ पे ओपन किया आपने? वी हैव ओपनड इन चांदीवली। पुणे कब आ रहे हो? वेरी सून। जल्दी। So right now there has been a lot of boom on food vlogging और बहुत लोगों ने उन्हें अलग-अलग वेज में रोस्ट भी किया है। आपका क्या टेक है फूड व्लॉगिंग पे? फूड ब्लॉगिंग मतलब ऐसा है कि इट इज नाउ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। मतलब वो पहले जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक आया था या ऑरकुट आया था उस टाइम पे, वो धीरे धीरे पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ बन गया। वैसे ही फूड ब्लॉगिंग एंड फूड ब्लॉगर्स हैव नाउ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ। तो चाहे वो एज अ रेस्टोरेंटर बोल रहा हूँ मैं, या एज अ फॉलोअर, या जो मैं एज अ इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, वो इट हैज बिकम, यू कैन से मैंडेटरी हो गया है वो। आप वो जरूरत भी है और नहीं भी है, दोनों चीजें हैं। कुछ लोगों को उनकी जरूरत है और कुछ लोगों को उनकी जरूरत नहीं है, बट वो ऐसा पार्ट हो गया है कि आप उनको निकाल भी नहीं सकते हो और आप उनको ज्यादा देर रख भी नहीं सकते हो। वो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, आई वुड से दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखें तो आज उसको नई चीजें एक्सप्लोर जो हर बंदा नहीं कर पाता है, उसको वो उनसे वो इंफॉर्मेशन मिल रही है। एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ रेस्टोरेंटर अगर मैं बोल रहा हूँ, तो जो मुझे एक बैंडविड्थ चाहिए या एक मार्केटिंग चाहिए, वो हम उनसे ले रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यार आज की तारीख में हर इंडिविजुअल एक ब्लॉगर है। सो चाहे मतलब मैं शायद से ब्लॉगिंग करता नहीं हूँ, बट कहीं मुझे अगर कोई चीज पसंद आएगी तो शायद मैं भी कोई चीज को कोई प्लेटफॉर्म पे उसको रिव्यू कर दूंगा, which I generally don't do it, but as I experienced a good thing, a good place, then शायद से मैं भी करता हूँ, and that is with everyone if I'm not wrong. मतलब हर एक जन के अंदर एक वो छोटा सा एक ब्लॉगर है जो अपने आप को मतलब जहाँ पे वो अच्छा कुछ एक्सपीरियंस या फिर कुछ एक गंदा बैड एक्सपीरियंस अगर उसको हो, तो आई एम श्योर वो नेगेटिव ब्लॉगर भी जनरेट हो जाता है अंदर से। सो अभी हम बात कर रहे थे कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट जो मैगी पे बेस्ड है, मैगी को मतलब इतना हेल्दी नहीं देखा जाता है, मतलब आप डेली उठ करके मैगी नहीं खा सकते, तो फिर आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हो कि मतलब आपके जो मेन्यू में कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस है, मतलब आप ऐसा कोई हेल्दी प्रोडक्ट खुद से इनोवेट कर रहे हो, मतलब जिससे आपका जो ये है ग्रोथ है और मतलब अच्छे से होगा? सर हम हेल्दी खाना खिलाने में बिलीव ही नहीं करते हैं सर। हेल्दी खाना अगर खाना होगा तो देयर आर अदर प्लेसेस वेयर यू कैन ईट हेल्दी फूड, बट आज अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो ही
I want him to go happy. हम्म, I want him to be satisfied. हम्म, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जितना मुझे समझ में आता है कि हेल्दी खाने से कोई भी satisfied नहीं होता है. हम्म, It is just that you are in that phase of your life जहाँ पे आपको वो खा रहे हो, या तो आप like you are fitness expert या आप एक sports person हो, या आप उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर चुके हैं जहाँ पे आपको हेल्दी खाना है. बट एज इंडियंस हम हेल्दी खाना नहीं खा सकते हैं. हमें अपना नॉर्मल देसी खाना चाहिए, या हमें चटपटा जो एक फूड होता है वो एज इंडियन हमें वो चाहिए. तो हेल्दी, हाँ, वी ऑल्सो हैव आटा मैगी एज अ ऑप्शन, जो एक हम ऑप्शन देते हैं आर्ट्स एंड ओट्स का. आटा मैगी एंड ओट्स का हम ऑप्शन देते हैं हमारे कस्टमर्स को कि ठीक है, उनको गिल्ट ना हो, थोड़ा ही हो भी रहा है तो थोड़ा गिल्ट हो रहा है कि मैंने मैदा नहीं खाया, आई हैव ईटन आटा नूडल्स और आई हैव ईटन ओट्स. ओके. सो आपने बताया कि आप ये हंग्री स्टार्ट करने से पहले आप राहुल को ही मिले, यश को मिले, तो फिर एक को-फाउंडर को, एक जो आम आदमी को-फाउंडर को कैसे फाइंड करे और को-फाउंडर कैसा होना चाहिए? को-फाउंडर जो आपके होना चाहिए, पहले तो आपका बैंडविड्थ मैच होना चाहिए उनके साथ में, एंड यू नो a co-founder should cover all aspects of food, like in all aspects of business. Business, not food, all aspects of business. Like your co-founder should be like from some of the backgrounds of business. जो आपके पास नहीं है वो उनके पास होना चाहिए, जो उनके पास नहीं है वो आपके पास होना चाहिए. That is my belief. That is what we think, and that is what जिस तरीके से हमने हमारी जर्नी जिस तरीके से हमने अपनी हमने भी हमारी जर्नी उस तरीके से स्टार्ट करी थी. I was having the expertise in food and beverage. जो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था वो था मार्केटिंग, बिजनेस वाला एक्सपीरियंस नहीं था. तो इस वजह से that experience was brought by my two other co-founders, Rahul and Yash. तो आपके co-founders वैसे होने चाहिए जो आपको नहीं आता है, and you should also learn those things जो आपको नहीं आती है. आपके अंदर धीरे धीरे you should also try to adapt all those things in your life. Okay, so how to find a co-founder? यार, that you need to trust your stars also. थोड़ा बहुत इसमें देखो स्टार्स का भी खेल होता है, I would say. And you need, मतलब आप किस एंटरप्रेन्योरियल, मतलब आप किस बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपको को-फाउंडर ढूंढना पड़ेगा. मतलब आप किस डायरेक्शन में आपकी बिजनेस जर्नी को शुरू कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड को-फाउंडर्स ढूंढने पड़ेंगे. So that totally depends upon person to person. हाँ, अच्छा co-founder मिलना नहीं मिलना, I'm sure that it is very difficult. Like you cannot, मतलब अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे आज एक कोई और co-founder ढूंढना है, तो इतना आसान नहीं होगा उसको ढूंढना. इतना आसान भी नहीं होता है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. कभी कभी मिल भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं. तो फिर आपने पिक्चर्स देखी? No, I haven't seen pictures. राहुल, आपने? I'm sorry, of what basically? Pictures movie, TV series. हाँ. TVF की. किसकी? TVF की सीरीज पिक्चर्स. नहीं. पिक्चर्स एक वेब सीरीज आई है, उसका सीजन 2 आया है अभी. सीजन 2 भी आया है उसका. सीजन 2 भी आया है उसके रिलेटेड. Okay, I'm very much out of the series and everything. I don't watch a lot. So okay, तो फिर फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में तो सर टाइम ऐसे तो देखा जाए तो टाइम मिलता ही नहीं है. फ्री टाइम में जो भी है फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली है, तो आई गेस वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
ओके, कमिंग अप टू फैमिली, आपने जब आपने आपका बीकॉम का बैकग्राउंड है और आपका एक शेफ का बैकग्राउंड है, आपने बताया कि आपने विवांता के थ्रू आपकी जो ट्रेनिंग थी वो करी थी, तो फिर ये जानना था कि आपकी फैमिली कैसी थी, मतलब अभी एक स्टार्टअप चालू करते हैं, हाउ वाज देयर रिएक्शन? So they were very supportive. In fact, all our families were very supportive in our decision. Very supportive. Because you need that support from your family and friends. आप एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में या एक बिजनेस जर्नी में आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट तो चाहिए, बिकॉज दे आर द वंस जब you know who are going to support you. And we have been lucky to have, all three have been very lucky to have the families which have supported us through thick and thin. Okay. अगर ये कोई अगर एक पॉडकास्ट देखता रहेगा, अगर उसको भी लगा कि मुझे भी हंग्रीहेड जैसी कोई कंपनी खड़ी करनी है, उसके सक्सेस को मुझे रेप्लिकेट करना है, तो फिर इस बिजनेस में इंटर कैसे करते हो और इसके सारी इन एंड आउट्स कुछ बता सकते हो आप देखने वाले को? मतलब आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मतलब अगर आपको फूड बिजनेस में आना है तो यू हैव टू लाइक बी, मतलब आई वुड से कि इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस. आपको उसको टाइम देना पड़ता है. हाँ, you really need to sacrifice your social life. सोशल लाइफ आपका, बिकॉज जहाँ पे लोगों की ऑफ होते हैं वहां पे आपका कमाई का दिन होता है. When the people are free, you are at work. When they are at work, you are free. Not free exactly, but Friday, Saturday, Sundays are the core business days. जिसपे पूरा 80% इंडिया आराम करता है, उन डेज पे आप काम कर रहे हैं. And those are your main days. तो वो सोशल लाइफ थोड़ा सा and a passion towards whatever you go. मतलब बेसिकली अगर आप एक रेस्टोरेंट में घुसना चाह रहे हो, a passion towards food is really important. Day to day changes, day to day innovations, day to day branding, everything is very important. Like in each and every aspect. एक अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फूड भी होना चाहिए आपको कि एंड ऑब्वियसली एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फूड प्लस यू आर इन द कस्टमर सर्विस सेक्टर. तो आपको एक अपने अंदर वो भी एक सहनशीलता लानी पड़ती है कि यू हैव टू यू कैन नॉट सैटिस्फाई ईच कस्टमर, बट यू हैव टू ट्राई टू सैटिस्फाई ऑल. एंड जो उनका फीडबैक होता है उस चीज को आप पॉजिटिवली लें, बिकॉज एट टाइम्स देयर इज नेगेटिव फीडबैक वेयर द कस्टमर गोज आउट ऑफ लिमिट्स एट टाइम्स, जहाँ पे वो नहीं, तो आपको उसको बहुत काम तरीके से हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज यू कैन नॉट आप उस चीज को एस्केलेट नहीं कर सकते. तो एक कामनेस और एक वो उसकी जरूरत होती है. एंड हमारे यहाँ पे मतलब एट हंग्रीहेड नो वर्क इज स्मॉल एट ऑल. वी कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्क. तो वो हमने शुरू से एट हंग्रीहेड वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि देयर इज कोई काम छोटा नहीं होता है. Okay. So I hope someday you become the Maggie of your space. Thank you. So would you like to say something before we conclude the podcast? So it was very nice to it was very a good experience overall talking to you all. Your questions were on target, at the right aspect, and definitely people would love the podcast and your efforts in the podcast. So I'd like to congratulate you and thank you for inviting us to the podcast. Okay. So thank you for coming, Arpit and Rahul, over the podcast. So this was our podcast with the Hungry Head.
you do like and share this podcast with your friends, and go follow them on their socials. So show some of our love to them. Thank you all, and goodbye.